सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारा लेक्चर 1 है ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें बातें स्टार्ट की जाए। ये मॉडर्न हिस्ट्री में बातें हो कैसे रही होंगी। देखो क्या होता है ना, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम चाहे तो 2 सीजन्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारा कभी हुआ होगा, ओके हाँ, ये कभी हमारा एक सीजन 1 हुआ होगा। ठीक है, और एक ये हमारा सीजन 2। डन, ये चीज समझ में आ गई। टाइमलाइन थोड़ी जान लेते हैं। सीजन 1 स्टार्ट होगा हमारा 1707 और कब तक चलेगा? 1857 तक। और सीजन 2 कब तक चलेगा? सीजन 2 हमारा चलेगा टिल हमारी आज़ादी 1947। तो यहाँ कुछ इवेंट हुआ होगा, यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ होगा और यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ होगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है। तो इस हिसाब से ये ऐसा कुछ कहीं क्लासिफिकेशन दिया नहीं हुआ है, बट ये हमने अपने आप के समझने की आसानी के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, कि मान लिया कि मॉडर्न हिस्ट्री कुछ सीजन्स में डिवाइडेड है। अब एक और चीज आते हैं। अभी हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं सीजन 1 के बारे में। सीजन 1 में हमारे डिफरेंट हाउसेस हैं। तो इन स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर्स हम 4 हाउसेस हैं यहाँ पे। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, लास्ट में हाउस 4। ये हमारे 4 अलग अलग हाउसेस है जो हमारे सीजन 1 में आ रहे होंगे। इंडिविजुअली और एक एक हाउसेस की बात कर ली जाए तो हाउस 1 के अंदर क्या आएंगे? हाउस 1 के आ जाएंगे हमारे अंदर हमारे जो लेटर मुगल्स थे। ठीक है, वो आ जाएंगे। हमारे मराठास आ जाएंगे, हमारे हैदराबाद। ठीक, ये हमारे हाउस 1 में आते हैं। हाउस 2 की जहाँ बात होती है, वहाँ पे हम यूरोपियंस को ज़्यादा देखते हैं। यूरोपियंस की बात होती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारे आपके सबसे पहले पोर्चुगीज आते हैं, फिर आपके डच आते हैं, आपकी इंग्लिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। तो ये सारा कंप्राइज करता है आपका हाउस 1 एंड हाउस 2। हाउस 3 और 4 के बारे में बात हम आगे करेंगे, बट ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि हमने अपनी जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री थी उसको हमने डिवाइड करा है कि सीजन 1, ठीक है, और सीजन 2। सीजन 1 में कब से कब तक शुरू है? सीजन 1 हमारा शुरू है 1707 से लेकर 1857 तक। सीजन 2 है हमारा 1857 से लेकर 1947 तक। तो इस हिसाब से 2 सीजन्स डिवाइडेड है। हर एक सीजन में हमारे को 4-5 हाउसेस हैं। ठीक है, तो सीजन 1 के 4 हाउसेस हैं, तो हमने सिर्फ हाउस 1 और हाउस 2 की बातें की हैं। ठीक है, सिर्फ हाउस 1 और हाउस 2 की बातें की हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते होंगे कि हाउस 1 हाउस 2 की बातें की गई हैं। हाउस 1 में हमने लेटर मुगल्स को देखा है, मराठास देखा है, हैदराबाद से देखा है। हाउस 2 में हमारे यूरोपियन पावर्स आ जाएंगे, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रांस। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बातें शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जबकि हमने देखा कि जो हमारा, अब हम हाउस 1 पे बातें करना शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउस 1 का पहला कैरेक्टर है हमारा जिसके बारे में बात करनी है हमें मॉडर्न हिस्ट्री में। दीज आर लेटर मुगल्स। ठीक है, क्या है ये? लेटर मुगल्स है कि मुगल्स थे। ठीक है, मुगल्स थे बट ये उनके बाद वाले हैं, ये हैं लेटर मुगल्स। ठीक है,
कि इनके बाद क्या हुआ है, ये वो है। तो अभी हमें इनके बारे में बात करना है कि ये लेटर मुगल्स कैसे थे, इन्होंने क्या क्या किया, और फिर क्या इनका वो काम है, क्योंकि हमें हाउस 1 में देखना है कि हाउस 1 में क्या इनकी सीजन 1 में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही और इनका क्या रिलेशन रहा ब्रिटिशर्स से। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता है कि सारे बच्चों को लेट, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको लेटर मुगल्स इन डेप्थ तब थोड़ा समझ में आएगा जब आपके पास थोड़ा सा आइडिया हो कि मुगल्स कैसे थे। क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा किया था, ठीक है, इन्होंने कुछ अच्छा किया था जिसको इन्होंने तहस नहस कर दिया या बिगाड़ दिया। तो पहले हम थोड़ा जानेंगे इन्होंने क्या अच्छा किया, इनके क्या रीजन से डिक्लाइन होने के, और फिर कैसे ये आए और इन्होंने और चौपट कर दिया। तो मुझे लगता है कि हमें लेटर मुगल्स की कहानी पे आने से पहले थोड़ा सा इंसाइट लेना जरूरी है कि इनके बारे में, मुगल्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जाएं। हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, बट मैं थोड़ा चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा मिडिवल के पास जाएं और एटलीस्ट ये टॉपिक तो टच करके आए, है ना, क्योंकि ये टॉपिक अगर हम टच कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें फिर आगे जब हम लेटर नोवेल्स कर रहे होंगे और बाकी सारी चीज़ कर रहे होंगे, मराठास देख रहे होंगे, क्योंकि मराठास के बहुत सारे रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे होंगे, मतलब अलग अलग चीज़ें जैसे कि औरंगजेब और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रिलेट हो रही होती हैं। तो एट दैट टाइम इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ से उस चीज़ को शुरू करनी चाहिए। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ द मुगल एम्पायर। तो चलो इसको जल्दी से मिटा देते हैं सारी चीज़ें। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। मुगल एम्पायर, ठीक है। थोड़ा सा टाइमलाइन डाल दूँ, ये कितने से कितने तक गए हैं, 1526 से लेकर के 1707 तक, ये इतना बड़ा पीरियड रहा है इनका। थोड़ा सा मुगल एम्पायर टेढ़ा हो गया, just like what they did after we can say 1707. मुगल एम्पायर, ठीक है, तो इसका हम भी खींच देते हैं। तो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, ये स्टार्ट कैसे हुआ। बात कर रहे हैं हम 1707 की, बट ये स्टार्ट कैसे हुआ, पहले थोड़ी टाइमलाइन बना दे। तो ये चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई। तो इस चीज़ को स्टार्ट की गई है यहाँ पे 1526 में। किसके द्वारा ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, बाबर के द्वारा। बाबर वो था जिसने मुगल एम्पायर की शुरुआत की। अरे कैसे शुरुआत की उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। मुझे लगता है शायद यार यहाँ स्पेस ले लूँ, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस बनाता हूँ, मुझे कितनी स्पेस चाहिए होगी। ओके डन डन डन, थोड़ा सा और, हाँ यहाँ पे मैं से इसके बाद से लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने जाना बाबर कब आया इंडिया में, 1526। तो ऐसा क्या क्या हो रहा था और क्या उसमें से चीज़ें थी। तो हम थोड़ा इंडिया का नक्शा बनाए, ठीक है। तो यहाँ कहीं फरघाना में रहता था ये बाबर, ठीक है। तो उसके बाद फरघाना के बाद वो कहाँ आ गया, वो आ गया काबुल। बाबर काबुल आया, फिर क्या हुआ, उसने देखा यहाँ पे दिल्ली में कौन राज कर रहा था उस टाइम पे,
इब्राहिम लोदी। कहाँ के थे वो? दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत। तो उन्होंने क्या किया, बाबर ने युद्ध किया किससे? इब्राहिम लोदी से, दिल्ली सल्तनत के, और उन्हें हराया और अपना रूल स्टैब्लिश करा। समझ में आ गया वो ये चीज। बाबर 1526 में इंडिया से फरगाना में थे, फरगाना से वो काबुल आए, काबुल में उन्होंने देखा कि दिल्ली पे कौन राज्य कर रहा है, इब्राहिम लोदी, और इनकी जो लोदी डायनेस्टी थी थोड़ी सी वीक हो रही थी, ठीक है। तो इसका फायदा उठाते हुए बाबर ने 1526 में लोदी डायनेस्टी पे, इब्राहिम लोदी पे अटैक करा। सो वो ये चीज थी, और इस थ्रू वो इंडिया में आए। तो हम फिर टाइमलाइन पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं। ये तो हाउसेस का आ गया, मुगल एम्पायर, ठीक। तो बाबर के बारे में जानने की क्या चीज होगी, एक बाबर के बारे में आप ये जान लीजिए कि उन्होंने क्या की, उन्होंने बैटल लड़ी, ठीक है। 1526 में एक बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत लड़ी कब? 1526 में। उसके बाद बाबर का रूल बहुत कुछ खास बड़ा रहा नहीं, ठीक है। तो बाबर का रूल खत्म हो गया अराउंड 1530, ठीक है। तब राजा कौन बने? तब बाबर के बाद राजा बने हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के युद्ध में, सॉरी, हुमायूं के टेन्योर में कुछ चीजें हुई। हुमायूं का टेन्योर चला है 1530 से लेकर, 1530 से लेकर कब तक? 1556 तक। अब देखो टेक्निकली कहने में ऐसा लग रहा है कि ये 26 इयर्स का रूल था, बड़ा अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छे से रहा होगा, बट नहीं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है, 1545 के आसपास इनकी भिड़न होती है शेर शाह सूरी, ठीक है। ये शेर शाह सूरी से लड़ते हैं, और एक सेकंड, इस चीज को थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर करना चाहिए, पूरा नहीं आया क्या, ये लिख देता हूँ। तो क्या हुआ, 1545 में हुमायूं की लड़ाई होती है शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी 1545 में हटाते हैं, और हुमायूं को अपना ट्रोन छोड़ के भागना पड़ता है। मुगल एम्पायर का राजा अपना जान बचा के भागा, ठीक है। तो शेर शाह सूरी से युद्ध हारे, और एक लंबे टाइम के लिए युद्ध के मतलब अपने बाहर रहे, इतना टाइम उनका बाहर रहा। बट जब देखा कि उन्होंने देखा कि शेर शाह सूरी मर चुके हैं, तो 1555 में उन्होंने अपना थ्रोन वापस ले लिया। तो हाँ, हम मानते हैं कि युद्ध हारे थे, मतलब रूल अपना उन्होंने गवाया था, बट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज कहेंगे हुमायूं को कि उसने वापस अपना एम्पायर एटलीस्ट एस्टैब्लिश तो कर लिया, ठीक है, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। नहीं तो अगर ये आगे, अगर ये शेर शाह सूरी और उनके डिसेंडेंट्स ही अगर रूल कर रहे होते तो फिर तो हम ये आगे की टाइमलाइन पढ़ ही नहीं रहे होते, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आई। अब आगे ये हमारे दो रूलर्स हो चुके हैं, इनके बारे में बात कर चुके हैं, बाबर के बारे में बात कर चुके हैं। बाबर के बारे में हमने क्या क्या पॉइंट्स बातें की हैं। बाबर के बारे में हमने बात की है कि वो 1526 में फरगाना से काबुल, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी दिल्ली में थे, दिल्ली सल्तनत के। तो उन्होंने सोचा कि वो वीक है, तो फिर उन्होंने उन पर अटैक करा और दिल्ली को कब्जा किया। वो कौन सा बैटल था? इट वॉज बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। उसके बाद बहुत शॉर्ट रूल रहा क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ जी चुके थे। तो मुगल एम्पायर में उनका रूल केवल 4 सालों का था। बाबर के आधार पे उनके बेटे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का रूल भी हमारा 1530 से लेकर 1556 तक चला, बट उनके रूल में थोड़े से ब्रेक हुए। क्या वो 1530 से 1545 तक रूल किया, बट 45 में उनकी लड़ाई हुई शेर शाह सूरी से, और शेर शाह सूरी ने उन्हें बुरी तरह से हराया।
1545 से लेकर 1555 तक टिल द डेट शेर शाह सूरी डाइड, और फिर ने देखा कि उनके डिसेंडेंट्स थोड़े कमज़ोर हैं, तब उन्हें लगा कि हाँ हम इन्हें हरा सकता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने 1555 में उन्हें हरा कर अपना थ्रोन वापस लिया। सो उसके बाद 1555 से एक साल तक 1556 तक हुमायूं का रूल रहा। सो बेसिकली हुमायूं के रूल को कहते हैं 1530 से 1556, बट रियलिटी जानते हैं कि ये केवल 15-16 साल का ही रूल था, क्योंकि बीच में बचे भी 10 साल तो हुमायूं थे ही नहीं। ठीक है, सो ये हमारे सेकेंड रूलर थे। अगर थोड़ा मुगल एम्पायर की बात करूँ ना, मुगल एम्पायर में अगर सिग्निफिकेंस रोल देखोगे तो केवल दो रूलर्स का है, एक हमारे अकबर हो गए और दूसरा हमारे औरंगजेब हो गए। ठीक है, और दो के बारे में हम अभी अपने लेक्चर्स में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये कोई मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। उसमें आपको इतना मुगल एम्पायर में पढ़ा रहा हूँ कि जब हम अपने मॉडर्न में पढ़ रहे होंगे तो उसमें ऐसा चीज़ दिक्कत नहीं आ रही होगी, कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छा अच्छा ये चीज़ औरंगजेब में यहाँ से रिलेट आई है, अच्छा ये उस टाइम अकबर की बात की गई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके, बस वो मेरा इंटेंशन है, और आपको समझ आ सके कि मुगलों ने क्या क्या सही किया था जो लेटर मुगल्स ने आके वो भी खराब कर दिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में एक ऐसा रूलर आया जिसने चीज़ें बहुत अच्छी सी चीज़ें स्मूथ की, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की। तो इन रूलर का नाम था अकबर। तो अकबर का रूल शुरू हुआ, इनका एक लंबा रूल था, स्टार्टेड फ्रॉम 1556 एंड एंडेड इन 1605। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 49 ईयर्स का रूल रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, इनमें क्या क्या चीज़ें हुई, ये ऐसे ही राजा बने। तुरंत 56 में क्या हुआ कि हेमू से इनकी लड़ाई हुई, तो ये भी बैटल ऑफ पानीपत होता है, बैटल ऑफ पानीपत किसके अगेंस्ट हुई, ये हेमू के अगेंस्ट हुई इनकी। ठीक है, तो ये एक बैटल है, और एक और बैटल इनके टेन्योर में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी, कब हुई थी ये बैटल, ये हमारी 1576 में हुई थी। इसे कहते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये किसके वर्सेस थी, ये वर्सेस थी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो अभी तक हमने अकबर के बारे में क्या पढ़ा, अकबर के बारे में इतना हमने दूर दूर से देख लिया है कि he will bring a very positive change towards the Mughal Empire. He will bring new things which were never been discussed in Mughal Empire till date, and after that we can see and we can feel that all we can see all the positive impacts of what Akbar has provided in the Mughal Empire. So now moving forwards, we will discuss what all things and what all uh, cultures Akbar has developed. So the very first one is of expansion. The one thing that Akbar did was, this was the map of India. So the point was, till Babur and Humayun, the Mughal Empire only resides within the northern India or within the surroundings of Delhi. But when Akbar came into picture, he decided to expand this. So what he did, he expanded his empire. So he was known for expansion. Okay, all clear? So one of the most remarkable thing of Akbar was that he expanded. Second, and I think the most important one, where he has an edge over all his uh, Mughal empires, were his administration. He had a very strong administration. We'll see how. We'll see how things were introduced and how we can say that it was a very nice rule. So administration. Okay. So what all things were there in administration? So yeah, revenue collection was there. Okay, he was religiously tolerant. He does not want to discriminate religions. So yeah, so he was really
religious tolerant. Okay, and why we can say that? Because he has removed jizya. Okay, so he has removed jizya and he has imposed deen. Okay, the spelling is deen a ilahi. So we'll just see what is jizya. So, like suppose in Mughal empires, the most of the rulers are predominantly what? They are Muslim, and they thought that okay, if we are living in a land and I am a Muslim leader and I will have my people Muslim. Okay, and if in the rule of a Muslim, if someone wants protection, and whoever will want protection, if a person is from another religions, okay, so then he or she will want protection. So yes, the Mughal empire is giving protection to that person, so he will now take some tax from it, because I'm protecting you. You are not from our religion, but still we are allowing you to stay with us. So in that case, the emperor will take tax from it. So this particular tax is known as jizya. So, but Akbar was what? Akbar was religiously tolerant. So he told that I won't discriminate between the religions and I will remove jizya. So what he did? He removed jizya. And okay, I've written this about revenue and I will show you how good was the revenue collection method which was started by Akbar. Okay, so another very much important thing that we have seen and which was very new when it comes to the rule of Akbar was the concept of Mansabdari system. Okay, okay. So only thing about Mansabdari system that I will share with you now is that Mansabdari system leads to a strong army. Okay, and a strong army leads to a strong administration. So these all things will go hand in hand. There is strong administration because of Mansabdari system, and due to Mansabdari system there is a strong army, and if there is a strong army, administration is it's very much strong. Okay, so we will see the revenue collection methods of revenue collection methods and what is Mansabdari system and everything in bit detail. Okay, so let's just move on to our below slide and see how we decode these things. Okay, let me just break this. Let me have a line. Shit, this is not a straight line. I always has trouble in making straight lines, but I will figure out. I think I have figured out, but no, I can do it better. Yes, we got it. Okay, so this was about the Mughal Empire, but now we are. This is not a timeline. This is just a separation between the two topics. Like there we had a timeline, and here we are discussing another such important things related to the Mughal Empire. Okay, okay. So here we are now going to discuss about Mansabdari system. Okay. So when it comes to Mansabdari system, it is about assigning some ranks. Okay. First of all, for whom this Mansabdari system are? This is for a military officer, or we can say this is for a civil officer. This is for a military officer, or we can say this is for a civil officer. What is there in Mansabdari system? In Mansabdari system, person or officer is assigned two kind of ranks. The first one is Zat rank, okay, and the second one is Sawar rank. Sawar, okay. So what Zat rank represents? Zat rank represents your status. Like for example, if somebody person has one Zat rank
and another one has 15 Zard rank, this will show that he has a better status than the person who has just one Zard rank. Okay, so yeah, so it helps in the status, it's help in the salary. A person having higher Zard rank will get a higher salary in compared to the person who is getting a lower Zard rank. Okay, and it will eventually help in your promotion. Like there is some classification of promotions, like suppose there is promotion A, B, C and D. So like if person is on Zart rank 1 to 100, he is in the rank A, and if he needs to get promoted to rank B, he needs to cross the Zart rank of 100. So in all these things, this will eventually help in the promotion aspect also. So status, salary and promotion. So in that perspective, we'll see the Zart ranks. And now supposedly at the time of Akbar, 5000 was the highest Zart rank. So okay, and so this was about the Zart rank. So what will a person think? The person will think that I will work hard, I work hard for Akbar, and will try to get more and more higher Zart rank. So if a person is thinking in this way, so it is very good. And everyone in the army is thinking like, yes, we will perform good, we will battle good, and we will try to make Akbar happy so that he will increase our Zart rank. So these all things will go hand in hand, which eventually leads to a stronger army, because in army everyone wants to perform better and want to get a higher status, higher salary, higher promotion. So yeah, that would help Akbar in his own administration. So Akbar had a strong administration due to the Mansabdari system. And you can say that in Mansabdari system the concept is something like that, and that will basically help him to get his a strong army, and that strong army will help him get a strong administration. Okay, so now we will have the Zart rank. Now we have Sawar rank. Okay, so Sawar rank basically means that it tells about a person's army, like how many cavalry you have, like how many horses and all these different things you have. So person will have supposedly there is a military officer, so he will have both Zard rank and Sawar rank. But suppose someone person like Birbal, or we can say Tansin, so why he will have a Sawar rank? No, in that case he won't have a Sawar rank, he will only have a Zard rank, because he doesn't need any kind of military for his work. So these all things go hand in hand. Another major aspect of Mansabdari system which was very great, like supposedly there is a war going on, okay, and Akbar has defeated a person B. So earlier what was going on, like first of all, either that person, the ruler or the king who has won the war, will kill the second person and take his throne, or in that case he will say that okay, you can rule, and plus you can rule your own state, but you will have to give me some money every day. Okay, every day or every time. So these were the things which were going on at that time, but Akbar, that implied a different thing. Like suppose for example Akbar is fighting a war with the person B, and Akbar has defeated a person B in war. So Akbar won't kill him, Akbar won't say rule in your own country and give me some taxes. No, Akbar will politely say, hey person B, I have defeated you in my war, now please be my mansabdar and work for me. Okay, so if a person says that okay, I am defeated in the war, Akbar could kill me, but he asked me to be a mansabdar, and I know the merits of being a mansabdar. Well, I will have Zat rank, I will better salary, I may have a cavalry, I may have a Sawar rank. So he felt that yes, this is a good option. So he itself will join the mansabdari system, and he will try to expand and perform good. And if each and every mansabdar is performing good, this will be very much helpful for Akbar itself, because he knows that if every single individual is thinking about getting better and better, eventually the whole empire will get better. So yeah, this way we can say the Mansabdari system was a very hit one. Uh,
Another very good model which was there at the time of Akbar was the Jakedari system. Okay, Jaki. So these both system can go hand in hand. Like suppose how these salaries were given to the mansabdars, how these salaries were given to the mansabdars. Okay, so the thing was like supposedly it was mansabdar to give salary. He has been assigned a jagi. Okay, jagi is what? Jagi we can say is a piece of land, and Akbar will knew that it will generate a revenue of 2 lakh rupees. Okay, and a person the Mansabdar salary is 1 lakh salary. Sorry, let's say 1.5 lakh. So what will Akbar do? Akbar will say person B, Mr. B, come to my land, come to this particular land. Okay, so this land has a revenue collection capacity of 2 lakh rupees. So you go collect 2 lakh rupees, take 1.5 lakh rupees as your salary, and whatever there will be extra 50,000, give it back to me. Okay, so these kind of system was existing in which a mansabdar was assigned with this particular land, and he has been said that this is particular salary and this is the ability of revenue collection from this particular land. And supposedly you are able to collect 2 lakh rupees and your salary is 1.5 lakh rupees. You need to return that extra 50,000 back to Akbar. So yeah, this was a very good model in which he is obviously he's free from collecting the revenue, and the mansabdar was there to collect the revenue, and just they tried to take maintain both these things. He tried to maintain the amount in which he can get his salary, and also just try to manage the extra amount he get to which he need to submit to Akbar. So yes, these were things, these were 2 or 3 things which were very much important, and because of that there was a great Akbar rule. So we can say that I am just giving you all a couple of minutes where you can just revise what Akbar did and what till now what all the 3 rulers had did. You can revise that. Okay, so just take few minutes and revise what Akbar did. We'll come back to our last remaining 3 rulers, and yeah, you'll see. Okay, so we were done with Akbar. Now we'll move to the next ruler in the Mughal Empire, which is Jahangir.
Okay, next rule. So I will just write his name downwards. So his rule was of only 23 years, and it ended in 1628. Yes, the only couple of things which we should know about Jahangir is that he was very much into consolidation. Consolidate. I am messing up with my handwriting, but I will not do that. Consolidate. This particular LA, I think consolidation. Okay. And another important thing in which he was very much into it was portrait. 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 Okay. So these are things in which Jahangir was very much into it. There is no such a detail required to understand about Jahangir to be understand about the later Mughals. No. These are only two important things which we can knew about Jahangir, and his regime was only of 23 years. Okay. Now moving on to the next ruler, he also has a quite a good amount of rule, but it is he's not very much important about the moral. The next story his name was Shah Jahan. His rule started from 1528 to, you can say, 1656. I think it's visible, or if you have some doubt I will write it clearly. 15, sorry, it is 16. I'm really sorry, it is 1656. Okay, so Shah Jahan ruled from 1628 to 1626. So he was the problem came into the rule of Shah Jahan was that he was very much into architecture. He usually spends his lots and lots of money in constructions. He will have many architectures, which all we knew. Most prominent one is the Taj Mahal. So okay, so he was very much into architecture. Okay, and he made Taj Mahal. Okay, this was only, yes. So these are only two things which we need to know about Shah Jahan. The first one is he was very much into architecture, and so he made many memorial sites which we can see till date. The most predominant one is that of Taj Mahal. Another thing which is important to know about the rule of Jahangir, and this particular problem will basically affect the whole Mughal empire later on till his next son, and even in the later Mughals. Like he at that particular point of time, he was spending a lots money in his architecture dream, on in his passion of architecture. And yeah, he was not using the money of his empire in a good way, and he was spending it in architecture. So the economy started declining in the rule of Shah Jahan. Okay, the economy started declining. Okay, these were the only two or three important things that we can learn about the rule of Shah Jahan. And as I said, there were only two prominent rulers in the Mughal Empire whom we need to discuss in a 5 minutes or 2 minutes, 3 minutes of detail. First one was Akbar, because he has a very positive impact, and now we'll see another ruler which doesn't have a very positive impact, but it has a long regime. Okay, so the next ruler for which we are going to study is of
Aurangzeb. So you may have saw a movie in past few months back. Its name was Chava. So in that movie also there was a reference, and there was a very major role of Aurangzeb and his evilness. We could see the evilness of Aurangzeb. So yeah, in 1556 his rule started, and it ended till 1707. Okay. So yes, he had a very strong battle with whom? Versus Shivaji, which basically he never won, but he never lost also. So yeah, another such important thing about Aurangzeb was that he was his religious policy. He bring back what? He bring back jizya. He imposed jizya, and whatever taxes which were not there by the empire to the non-Muslim people, now they have to give their taxes, as jizya has been imposed. Another one was his Deccan policy. We'll see about his Deccan policy, in which it was about the Marathas. And another, his territorial climax, his territorial climax with whom? It was with Marathas, it was with Sikh, it was with Rajput. Okay, so these were all things were there. So yeah, we'll see some more thing about Aurangzeb in detail in our detailing slide. Come on, move downwards, move downwards, move downwards, move a bit, move a bit, move more, move more, move more. Okay, I'll be able to explain in this space only. Okay. So this is India. We are drawing only the half map just to get the feel of how things were. So yeah, Aurangzeb was ruling here. Aurangzeb, he expanded his rule till south. He has expanded it. He has expanded it. Here also he has expanded it. Okay, but we are not seeing about his expansion. We are seeing about the territorial climax. Uh, okay, so the problem about him was that he had a problem with whom? He had a problem with Sikh, in which he has uh, killed Guru Tegh Bahadur in 1675. Okay, he had also had problem with the, we can say, Rajputs. Rajputs are also having problem with him, and in down south in Deccan he has problem with Marathas. Okay, I will just because at that time when Shivaji died in 1680, Shivaji died in 1660, so he has basically two sons. One was Rajaram and another was Sambhaji Maharaj. Sambhaji Maharaj. We will write the full name. So Shivaji, sorry, Aurangzeb killed Sambhaji, and he put Sahu in jail. Okay, and at that time Raja Ram and Shivaji too were having their regime in the Marathas. So after Shivaji's death, after Shivaji Maharaj passed away, he Sambhaji was ruling. So Aurangzeb killed Sambhaji and he put Sahu in jail.
So yeah, this was the thing that Aurangzeb did. Okay, so timeline wise, we can say story wise or timeline wise, this was the only important thing which we really wanted to know about the Mughal Empire. Okay, so we can easily, so these were about the two seasons which we were discussing. We are there in the season one, and in season one we are in the house one of later Mughals. So just to get the feel of what later Mughals is, we need to understand what Mughals were. So in this particular slide we discussed about all the Mughal empires, emperors which were there. Predominantly there were only 3, 4, 5, 6 rulers. We have discussed about the rules, the major contributions that they did, the major drawbacks, flaws, and bad things that they did. So this was all about this particular lecture. In this, the Mughal Empire is not yet over. We have one more topic to do, and just writing the heading of the topic. And in the next lecture, we will have that topic. Okay, I'm just assigning space to write the heading. Okay, so the next topic is of its decline of Mughals. Okay. So in the next lecture we'll start with the topic of decline of Mughals. It will be a very short topic. We'll cover that in just 10 to 15 minutes, and in the later lecture we will move on to the later Mughals, which is there in our modern history. So yeah, this was all about this particular lecture. I hope you have understand all these things which we wanted to share to you. Goodbye.